अनम्यूटेड है, आप अनम्यूटेड। नमस्कार। फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका नाम है श्रीमती सोनिया भंडारी। सोनिया भंडारी साइको एनालिस्ट हैं, ये रिसर्चर हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, आर्ट थेरेपिस्ट हैं। ये आर्ट थेरेपी का कार्य कर रही हैं और ये बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ी हुई है। विवांस हॉस्पिटल के साथ भी है, रीड इंडिया, रीड ग्लोबल के साथ जुड़ी हुई भी है। अपना इनका स्टूडियो है, ये क्लिनिक नहीं कहती, स्टूडियो कहती है। और आज के कोरोना काल में जब हम लोग चारों तरफ, हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं, उस स्थिति में हमें एक ऐसे थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिससे लोगों को किसी कला, जो चारों तरफ जो उनका दिमाग भटक रहा है, उस भटकन को हटा करके कला की तरफ उनको अगर जोड़ा जाए, तो उनका जो कलाकार का मन है वो जागृत हो जाता है और उनका जो तनाव है, उनका जो फ्रस्ट्रेशंस है, उनका जो दुराव है, उनको जो नींद आने की नहीं आने की समस्या है, इस तरह से आपस में जो मनगढ़ंत है, प्रतिस्पर्धा और कॉम्पिटिशन ने उनके जीवन को ध्वस्त किया हुआ है। इन सारी चीज़ों के लिए आर्ट थेरेपी एक बहुत बड़ा थेरेपी साबित हो सकता है। और यह थेरेपी, आपको बताता चलूँ कि विदेशों में यह बहुत कामयाब थेरेपी है। भारत में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं इस थेरेपी पे, और ये जो 2-4 लोग इस थेरेपी में काम कर रहे हैं, उसमें सोनिया भंडारी भी एक है, जो हमारी मित्र भी हैं। तो हमारे कहने पर सोनिया जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया है और वही है। सोनिया जी, फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। बोर्ड मैसेज बोलिए बोलिए बोलिए। यस, सो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो टॉपिक आज जो आर्ट थेरेपी और पेरेंटिंग है, वो ही जिंदगी का एक फाउंडेशन है। हम उसको एक नया नाम जरूर दे देते हैं, उसको एक बैकग्राउंड, एक टर्मिनोलॉजी जरूर दे देते हैं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा गहराई में जाएं तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू हम इन प्रैक्टिस से, आर्ट थेरेपी और पेरेंटिंग ट्रेनिंग से क्रिएट करते हैं, वो ही एक जिंदगी जीने का तरीका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो आर्ट थेरेपी है, उसका जो निर्माण हुआ था मेनली, वो हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 से। तब भी बहुत मुश्किल का घड़ी था पूरी दुनिया के लिए, और ये मुश्किल की घड़ी के वक्त ही क्यों ये सब जो ऐसे थेरेपी का निर्माण होता है, साइकोलॉजी का निर्माण होता है, क्योंकि हम अपने मन के अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, वो बहुत ही संकट में आ जाती है। हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो ऊपरी नजर नहीं आती है, वो आपके अपीयरेंस में नजर नहीं आएगा, वो आपके तनाव में एक सिर्फ आपके माथे पे परेशानी नजर आ जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो ट्रॉमा चल रहा होगा वो किसी को नजर नहीं आएगा। तो वो जो नहीं नजर आता, वो आर्ट के थ्रू नजर आ सकता है, आर्ट के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पेरेंटिंग क्यों? ये बहुत ही लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो कॉम्बिनेशन है सोनिया, इसका मतलब क्या, आर्ट थेरेपी पेरेंटिंग? तो इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि मेरे को शुरू से हमेशा, आई थिंक आई विल टेक इट बैक टू माय पेरेंट्स, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने जो परवरिश मुझे दी है, आज जो भी मैं हूँ, अदर देन माय टीचर्स लाइक डॉक्टर मिश्रा एंड मेनी ऑफ देम, दे ऑल हैव given me that journey where I have realized कि जो हमारे अंदर एक पावर है, वो पावर छुपी हुई है। उस पावर को निकालने के लिए हमारे को कोई ऐसा जरिया चाहिए जो सिर्फ एक सब्जेक्ट
बनकर न रह जाए, बल्कि एक प्रैक्टिस लाइफ में बने। तो ये चीज मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर इनग्रेन करी, और जब मेरे पेरेंट्स ने इनग्रेन करी, मैंने अपने हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो, चाहे वो पेरेंटिंग ट्रेनिंग हो, उसमें जब इनग्रेन करना शुरू करा, तो मैंने रिजल्ट्स देखे। जब मैंने रिजल्ट्स देखे, तो जब मैंने विमेंस हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो वहां पे जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर, मेंटल इलनेस को लेकर, मानसिक बीमारियों को लेकर जब मैंने पेशेंट्स को देखा, तो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से वो बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसे जैसे वो 104 बुखार में जिंदगी जी रहे हो। जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ 4 दिन का बुखार नहीं, बल्कि जिंदगी 104 बुखार में जी रहे हो, दुनिया की होश नहीं। और फिर मैंने जब प्रैक्टिस, आर्ट थेरेपी प्रैक्टिस उनके साथ करनी शुरू करी, तो इट ऑल बॉइल्ड डाउन टू पेरेंटिंग, इट ऑल बॉइल्ड डाउन टू एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं उनके वातावरण में और कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में कोई ना कोई चैलेंज रह गया, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गई, और वो प्रॉब्लम बीमारी में बढ़ गई। और जब बीमारी आ जाए, तो उसका इलाज तो कराना ही कराना है। तो मैंने जो ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी, इसका मैंने चैनल सिर्फ मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में लगा दिया। सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। मैं विमेंस हॉस्पिटल में आपके आपके इस कार्यक्रम को देखने के लिए गया, और मैंने कहा कि मैडम के क्लिनिक में जाना है। तो उस क्लिनिक में लिखा हुआ था स्टूडियो, और जब मैं वहाँ गया, तो मुझे लगा कि मैं एक कला वीथिका में आ गया हूँ। आई एम इन द आर्ट गैलरी, where the arts are carefully decorated, exhibited, and every art has a meaning. Every art has a cognition value. The art was telling something. There was some message, little bit of message of knowledge, little bit of engaging the people, little bit of knowledge of relaxation in your artwork. Why have you, or your stream that you have inculcated into your personality, has this power or this tendency to name it as a studio instead of clinic? Would you tell something about it to the audiences or the viewers who are listening to your program? यस, यस, आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया है, क्योंकि इस पॉइंट को मुझे एक चीज ब्रॉडकास्ट करने का एक मौका मिल रहा है। मैंने अभी एक वर्कशॉप अभी एक खत्म किया है, और इस वर्कशॉप में जब आई, तो उस वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट ने पूछा कि मैम, अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहें लेकिन खुद पढ़े लिखे ना हो, और हमारा जो सराउंडिंग है वो पढ़ा लिखा ना हो, तो हम क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? तो मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि एजुकेशन है क्या? आपके लिए एजुकेशन क्या है? तो मेरा ये कहने का मतलब था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन फॉर एवरीवन इज ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। सो जो आर्ट थेरेपी स्टूडियो है मेरा हॉस्पिटल में, इवन तो अभी आजकल कोविड बहुत बना हुआ है, एंड आई एम रियली प्रेइंग फॉर एवरीवन टू बी सेफ देयर। तो आर्ट थेरेपी स्टूडियो ही क्यों क्यों क्योंकि जब मैंने हॉस्पिटल में जब पेशेंट्स को कुछ एक्सप्रेस नहीं करने का जरिया देखा, और सिर्फ उनका ट्रीटमेंट चला था, सिर्फ नहीं, मेरे कोलीग्स और इतने अमेजिंग डॉक्टर्स जो उनका ध्यान रख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, आई सैल्यूट देम। बट एट द सेम टाइम उनके मन को, उनके अंदर के जो मन, जो प्रॉब्लम है, वो क्या सोर्स है उस प्रॉब्लम का, उसको समझने के लिए मैंने जब अपने 5-6 साल लगाए, तो मैं समझ गई उनको एक लेबल नहीं चाहिए कि आप मेंटली इल हो, क्योंकि आधी उनकी प्रॉब्लम खत्म वही हो जाती है जब उनकी तकलीफ को समझें कि उनकी तकलीफ भी ह्यूमनिस्टिक सिचुएशन से ही आ रही है। एक इंसान को इंसानियत अगर नहीं मिलती है कहीं पे भी, अगेन इस वर्कशॉप में एक लेडी ने बोला कि जब मैं अपने घर में आती हूँ तो मुझे सुकून चाहिए, लेकिन घर में इतना गंदगी होती है, कभी किसी ने कुछ फेंका हुआ है तो मुझे सुकून नहीं मिलता। अब वो क्या करेगी? तो घर में आएगी, उसकी अपना घर है, घर से जा तो नहीं सकती। तो हर इंसान को सुकून चाहिए। अगर वो सुकून आप
आपको कहीं बाहर से नहीं मिलता, तो वो सुकून आपको अपने अंदर का पावर दिलाता है। और आर्ट थेरेपी में वो पोटेंशियल है कि जब आप अपने आप को पहचान जाते हो, जब आपको कोई लेबल नहीं करता कि आप मेंटली इल हो, और आप ड्राइंग के मैजिक के थ्रू अपने मन को समझ सकते हो, और जो ड्राइंग आप करते हो, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ड्राइंग था उसमें कितनी खूबसूरत कहानियां थी, वो खूबसूरती उनके मन की थी, उनकी इंसानियत की थी। तो वो जब खूबसूरती खुद देखते हैं और आर्ट की स्किल के अकॉर्डिंग ना देखकर अपनी भावनाओं को देखते हैं, तब उनको भी लगता है कि वो इंसान है, वो सिर्फ एक लेबल बन के नहीं रह गए हैं, इंसान है। और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, हिचकिचाते नहीं है, और वो उस लेवल पे आ जाते हैं जब वो अपने ऊपर एक विश्वास पैदा करना शुरू कर देते हैं, उत्पन्न आना शुरू हो जाता है, जिसमें वो अपने प्रॉब्लम के हल को खुद निकालना शुरू कर देते हैं आर्ट के द्वारा। हमने म्यूजिक को थेरेपी के रूप में तो देखा था, और हमने ये भी सुना है कि श्री श्री या और भी सारे लोग म्यूजिक के मार्फत से बहुत काम करते हैं, और म्यूजिक में वो वाइब भी देखा है हमने। लेकिन कला में जो थेरेपी थेरेपी आप देखती हैं, कला में जो सेंस ऑफ एंगेजमेंट देखती हैं, कला में जो आप ये देखती हैं कि कला के माध्यम से कैसे हम करें, वो क्या है? कैन यू टेल अस ब्रीफली अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर डिसिप्लिन? हाउ डज इट मैनेज? हाउ डज इट ऑपरेट? व्हाट इज द एटिमोलॉजिकल मीनिंग एंड एक्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इट? इसको जरा थोड़ा सा समझाइए। आर्ट के दो मायने होते हैं, एक आर्ट इन थेरेपी होता है और एक एज अ थेरेपी होता है। आर्ट इन थेरेपी होता है जिसमें थोड़ा साइको एनालिसिस आ जाता है, जिसमें कुछ ऐसे कुछ नहीं, जो भी आप ड्रॉ करते हैं वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज हमारे लिए बन जाता है आर्ट थेरेपिस्ट के लिए ट्रेनिंग के बाद। इसमें ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होती है। तो वो सिंबॉलिक इमेज भी बन जाता है, उस सिंबॉलिक इमेज से हमारे को बात करने का एक जरिया बन जाता है हमारे क्लाइंट, पेशेंट और हमारे बीच, और जो कभी गलत नहीं होता। वो ऐसा उसको फोकल पॉइंट्स कहते हैं। उस फोकल पॉइंट्स को समझने के बाद कि जो जो इमेज बना है, उस इमेज का मतलब क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा क्या रखा हुआ है जिससे हम उसकी प्रॉब्लम्स, उस इंसान की, क्लाइंट की, पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। चाहे वो कोई रंग भर रहा हो, चाहे वो इमेज को कैसे ड्रॉ कर रहा है और किस अप्रोच से कर रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे ही पता चलता है हमारे को इंटरव्यू के टाइम कि पेशेंट किस प्रॉब्लम से निकल रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, किस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो आर्ट थेरेपी में कुछ अप्रोचेस हैं जिन अप्रोच से हम उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो कुछ अप्रोच है कि कभी कोई पेशेंट कहानी के द्वारा, कहानी सुनकर या कहानी को बनाकर मन में उसके ऊपर आर्ट करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। कुछ पेशेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में, वातावरण में फूल पौधे के द्वारा उसको, उसके ऊपर कोई कला करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो मंडाला, जो एक बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, उसके द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स हैं जो थोड़ा सा, जिनकी हम इंटेलिजेंस, कॉग्निशन जिसे कहते हैं, कॉग्निशन को, इंटेलिजेंस अलग है, कॉग्निशन, कॉग्निशन को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि क्या वो सोचने, समझने, बूझने के लायक है या नहीं है, कहीं उनकी कॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो भी एक अप्रोच हमारे को लड़ाना पड़ता है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, एक तो ये। तीसरा, आर्ट मटेरियल्स अलग अलग यूज करने पड़ते हैं। कुछ लोगों को पेंट से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग क्ले से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग ड्राई पेस्टल, ड्राई कलर से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कई लोगों, कई पेशेंट्स को छोटा एरिया चाहिए, कई पेशेंट्स को कैनवस चाहिए। सो ये सारा हमारे को ट्रेनिंग से एक तो सीखते हैं और इंटरेक्शन से सीखते हैं। जब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं, तब पेशेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हैं और अपने आप को ट्रीट भी कर पाते हैं। I In hope that between, I answers have your a question. curiosity to know.
In between, I have a curiosity to know from the perspective of the viewers and the perspectives of the others. We have a sense of ourselves and a sense of others. Anjani Kumar Jha लिखते हैं, the soothing touch and serene sight of art not only reduces stress on mind, but also refreshes the painting soul. Yes, up to some extent he is right. मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जो बहुत सारे एक जानर्स के बहुत सारे स्टाइल्स को आप लेती हैं, कोई पेंटिंग से होता है, कोई स्केचिंग से, कुछ अलग अलग होता है. How do you decide that this would work and this would not work and this would exactly work, and it is just trial and error? How do you manage those things? My question is Well, that. it is it is basically once there was a patient who was admitted in the hospital whereby after being diagnosed with schizophrenia. So her uh, her level of schizophrenia or paranoia was very intense. And जब वो intensity ज़्यादा anxiety intense होती है और घबराहट मन में ज़्यादा होती है, तो minute work नहीं करना चाहिए, क्योंकि minute work is very meditative. तो उस meditative work से आप उसके psychosis को और enhance कर रहे हैं, right? So एक तो ये एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे अगर किसी पेशेंट कोई सब्सटेंस अब्यूज की वजह से एडमिट हुआ है और उसके स्मोकिंग की आदत उससे छूट नहीं रही है, तो मैं उसको कुछ ऐसा उस पेशेंट को काम कराती हूँ जिसमें उसकी एंगेजमेंट कुछ लंबे घंटे के लिए हो, ज्यादा घंटे के लिए हो, ताकि उसके अंदर जो एक एडिक्शन की वजह से उसका मन कर रहा है कि मेरे को स्मोकिंग अभी करनी है, तो मेरे साथ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं कि 2-2 घंटे उसके अंदर का जो फीलिंग है स्मोक करने का, वो कर्ब हो जाता है. कुछ ऐसे भी केसेस रहे हैं, जैसे एक छोटी सी लड़की जो जिसको ऑटिज्म है, वो मेरे पास छोटी थी उस टाइम, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई, 3-4 साल पहले की बात है, जो वो मेरे पास आई थी. तो वो आते ही कमरे में हर चीज को सेंस करना चाहती थी. तो सेंसरी इश्यूज ऑब्वियसली ऐसे बच्चों में होते हैं, तो वो सेंस करना चाहती थी. तो मैंने कमरे को बिल्कुल सेंसिटाइज कर दिया, जिससे वो अपने आप को हार्म ना करे, और अगर वो सेंस भी करना चाहती है तो उसके लिए सारे जितने भी मटेरियल है वो सेफ रहे. तो आर्ट मटेरियल भी सेफ रखना पड़ता है. ऐसे बच्चे कभी कभी क्रेयॉन को अपने नाक के अंदर भी डाल देते हैं, तो चाइल्ड फ्रेंडली पेंट्स और पेंट ब्रशेस और क्रेयॉन्स को चाइल्ड फ्रेंडली स्टॉक रखना पड़ता है, जिसमें वो सेफ रहे, अपने मुंह में ना डाले. पेंट नहीं रखना होता, जिनको सेंसरी इश्यूज होते हैं कि वो पेंट पानी में डालकर अपने मुंह में वही पेंट पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं. तो ये सारी जो एरियाज हैं ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखने पड़ते हैं. सेकेंडली, जैसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है, वहां पे वायलेंस का एपिसोड्स बहुत होते हैं. तो वायलेंस के एपिसोड में हम लोग कोई ऐसी चीज नहीं रखते थे जो हार्मफुल हो, वो बिल्कुल मिसाइल की तरह बन जाते हैं. तो धीरे धीरे जब आर्ट थेरेपी किया, तो सबसे खूबसूरत रिजल्ट ये आया कि जो पहले मैं कोई पेपर भी वॉल के ऊपर नहीं लगा पाती थी, दूसरे दिन आती थी वो फटा होता था, या फिर कोई आर्टवर्क फ्रेम टूटा होता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ किसी चीज को टच नहीं करता था. आर्ट थेरेपी से, एवरीडे आर्ट थेरेपी एक्टिविटीज से वो उनका कैथार्सिस इतना हो गया, वो इतने काम डाउन हो गए कि उनका वायलेंस लेवल कम हो गया. जो रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कहते थे कि हम पहले इंजेक्शंस लेकर भागते थे, लेकिन अब वो रातों रात इंजेक्शंस लेकर नहीं भाग रहे थे. पेशेंट्स काम हो चुके थे. हॉस्पिटल में कुछ डेकोरेटिव और कुछ नोटिस बोर्ड्स भी लगाने शुरू हो गए, और पेशेंट्स ने उनको टच करना बंद कर दिया था, जो और भी वायलेंट होते थे. बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट आर्ट थेरेपी. आर्ट थेरेपी फर्स्ट एक्टिविटी आई थी, लेकिन उससे बहुत ब्रांचेस और भी खोल दिए गए थे, क्योंकि इससे एक ऐसा कामिंग डाउन इफेक्ट आ गया कि बाकी जैसे जैसे हर ह्यूमनिस्टिक एरिया में, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक अच्छा लगता है तो वो कर दिया, योगा पसंद है तो योगा का एक्टिविटी कर दिया. नाउ कमिंग बैक टू द विजुअल एस्पेक्ट से ही हमारे को पेशेंट्स के नीड्स और पेशेंट्स को क्या सूट करता है वो पता चला.
Visual is the tangible, projective aspect of a person's true emotions. So this is where visual plays an important role, and this is where I was able to understand where the problem is coming from. मैं ये भी समझ पाई थी कि उस if patient को क्या अच्छा लगेगा. तो visual has a very tangible, projective expression. Yeah. ठीक है, visual have the visibility or sense of impacting. It has the power to impact, and it has rightly been said that it gives you the soothing touch और criminality of mind जो है, frustrations जो है, restlessness जो है, वो धीरे-धीरे reduce होता है. आपका ये कहना है. इंडिया जो है, because of the colonial the dominance in India for so many 100 years, हमारे यहाँ का माइंडसेट ये हो गया कि विक्टोरियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो 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 जिसको आप एलोपैथ कहते हैं, वो इतना पावरफुल है कि नए सिस्टम्स को लोग इंजॉय नहीं करते, या डॉक्टर्स जो हमारे डॉक्टर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी जो सॉरी से, but they are very orthodox community. They do not allow the allied subjected to experiment, and the allied experts are not allowed to go in the mainstream of medical sciences, whether it is all India Medical Sciences or BIMHANS, where with which you are associated with. मुझे आप बताएं कि वो आप में वो जादू का क्या कनेक्शन था कि बीमहांस ने आपके प्रपोजल को, a 5-star hospital in Delhi, which is a wonderful hospital with all facilities. I have seen your studio there, and you are doing extremely well there. People are coming to you, and you are solving their problem. I have seen you treating the patients, or treating the people who have some problem. Patients would be the wrong word. So I would I would I'm interested in knowing, how do you manage to get your entry into the 5-star hospital of Delhi, Bimas. And Dr. Rajiv Verma is a professor in Delhi University. He says very true. Art can permeate the very deepest part of us where no word exists. Okay, please. First of all, I would like to say that कोई aspect life का कभी भी support के बिना आगे नहीं बढ़ सकता. So I would here like to say that the director of Vimhan supported me thoroughly, and because he himself believed, he and his family, very traditional family, very beautiful family, who started this hospital. His grandfather also started this hospital on the humanistic level. So जब वो नींव ही इतनी ह्यूमनिस्टिक बनी हुई है, तो वहां पे आई डोंट थिंक देयर वाज एनी मच जहां पे मेरे को कोई प्रॉब्लम होनी थी. इट वाज मोर लाइक एज इफ a place was made by the almighty for me over there, right? Secondly, I strongly believe, मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करती हूँ कि जब सपोर्ट के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, तो सपोर्ट को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. So whether it's a psychiatrist who did not believe in me, whether it's the other psychologists who were very kind and very subtly relating to me, but all I can say is that I respected every profession. जब मैंने किसी प्रोफेशन के साथ कोई चैलेंज नहीं अपने आप को समझा, तो मेरे लिए भी रास्ता खुलता गया. और मैंने जब हर एक प्रोफेशन को एक अपना टीम समझा, बिकॉज द बेस्ट पार्ट आई कैन शेयर विद यू द बेस्ट आंसर वुड बी कि मेरे पास जब क्लाइंट्स या जिन लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, मेंटल इलनेस होती थी, जो मुझे जानते थे, वो मुझसे पूछते थे कि हम कहाँ जाएं, हमारी ट्रीटमेंट कौन करेगा, प्लीज कोई डॉक्टर बताओ. तो मैं हमेशा विमहांस का नाम लेती थी. क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे जो सिस्टम है वो टीम वर्क है. एक डॉक्टर डायग्नोस करेगा, साइकोलॉजिस्ट और आर्ट थेरेपिस्ट इकट्ठे एज अ टीम उस पेशेंट को, I've had my psychologists in the beginning wherein they I can't even tell you, that was very very kind of them. Yet I used to have a very big challenge in the sense कि ये competition सा लगने लग गया था.
कि कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा, लेकिन as in how I evolved, ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने आना शुरू कर दिया जिन्होंने मेरे साथ ऐसी टीमिंग शुरू कर दी कि जहां पे उनको लगा कि पेशेंट के अंदर आर्ट का स्किल या आर्ट का इंटरेस्ट है, हमने एज अ टीम वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने उनके लिए कोई चैलेंज खड़ा नहीं करा। अगर वो पेशेंट डायरेक्टली मेरे पास आया तो मैंने उसको पूरी तरह ट्रीट करा। लेकिन अगर वो पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आ रहा है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आ रहा है, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैंने अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग बना ली कि वो पेशेंट आधी कहानी अगर साइकोलॉजिस्ट से बोल रहा है तो मेरे साथ ना बोले, जो मेरे साथ बोल रहा है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ ना बोले। तो ये बाउंड्री क्रिएट करने का एक मौका मिल गया मुझे आर्ट के थ्रू। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है तो मैं पूरी कोशिश करती कि वो आधा पौना घंटा मेरे साथ आर्ट करे और 10 मिनट मेरे साथ बात करे। और जब वो मुझसे बात करता था तो मैं उसकी पूरी फीडबैक साइकोलॉजिस्ट को देती थी और ऐसे ट्रीटमेंट होता था। तो ये भी मेरी एक लर्निंग रही है, क्योंकि मैंने वहां पे किसी को एक अपने से अलग नहीं समझा। मैंने उनको एक इंसान को नया डायरेक्शन दिखाने के लिए उनको अपनी लाइफ में एम्ब्रेस कर दिया। जैसे ही एम्ब्रेस करा, इट बिगैन टू वर्क, इट बिगैन टू वर्क। So you want to say that it is a therapy of art to engage, wherein the art of engaging the people is the essential thing for the counselor or a doctor who has been engaged in the process of improving the lifestyle of the person who has gone to her or him as a patient, or somebody who has some problem in some corner of his personality, right? So हमें आप एक बार बताइए कि मुझे जब आप मुझे मिली थी और आपसे मैंने सारी बातें की तो मुझे लगा कि look, there is a girl with a very intrinsic and inner side ability to change the world and change India, at least she has been trying hard to do this. और फिर जब मैंने आपका एंगेजमेंट था बेमहांस में और अर्बन सेंटर्स में, तो मुझे लगा कि इट इज समथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद द अर्बन लाइफ स्टाइल ओनली। बट फिर मैंने देखा कि आप रीड इंडिया में हजारों बच्चों के साथ, with the slum, with the children of the slums, with the children of the pavements, with the children of the squalors, with the children of the remote tribal area, with the children of the Mewat, with the children of the Rajasthan, आपने काम किया उनके साथ। आप बहुत जगह मेरे साथ भी गई हैं। आई हैव सीन यू डिलीवरिंग द लेक्चर एंड आई हैव सीन योर मैग्नेटिक एबिलिटी। लोग आपके पास सटते हुए चले आते हैं। बच्चों में मैंने देखा है कि आपके प्रति बहुत ये होते हैं। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है कि जिसको पति बहुत मारते रहता था और वो बेचारी सहती रहती थी, उसमें भी आपने एक आत्मबल दिया, वो अपने कंधे पर खड़ा होती है, वो समाज से लड़ना भी जानती है। आपने ये सब उदाहरण दिया और मैं अपने वो हमारे दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शी हैज डूइंग एक्सट्रीमली वंडरफुल जॉब। तो डॉक्टर राजीव वर्मा फिर कहते हैं कि इन इंडिया द आर्ट थेरेपी इज नॉट वेरी पॉपुलर। वेरी ट्रू। What is the duration and cost of the session of art therapy? हाँ, it is आप इनको जवाब दे दीजिए, फिर हमारे क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा कि डॉक्टर राजीव वर्मा कहते हैं कि ये वेरी पॉपुलर चीज नहीं है और इसका ड्यूरेशन कोर्स का क्या है, और अगर इसका जो थेरेपी का सेशन का चार्जेस क्या है वो आप उनको बता दीजिए। तो और अपना संस्था का भी नाम बता दीजिए, तो दे कैन कॉन्टेक्ट। आप बताइए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आपकी कैसे आपने भारत के गाँव में काम किया है। हाँ, तो ये ड्यूरेशन एक घंटे का होता है, 50 मिनट्स टू 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। एंड cost can vary, so which I think maybe I can message, because I'm not too sure whether I am allowed to express the cost over here on the platform, but I can definitely message it. Yeah, I can share it on the email. Dr. Burma, so Dr. Burma, anybody who is willing to have the fees and other detailing can contact me, contact Yes. FolkBrain office, and we will give you all the details, including her number and everything. Thank you. Please carry on. हाँ जी। So आपने जो रूरल लाइफ रूरल लाइफ, या सो रूरल लाइफ में एक्चुअली मेरा शुरू से एक फोकस था कि आर्ट में, मैंने आर्ट थेरेपी में मैंने जैसे ही देखा कि
it is touching everyone's heart so much. There is power in it. And then came the opportunity, which just came in my life, that how can I help in women empowerment? Now, women empowerment cannot be separate from children, right? So उसमें बच्चे भी आ गए, women empowerment भी आ गया. एंड जब मैंने मेरा अपना स्टूडियो पहले होता था, तो उसमें मैंने बच्चों को मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्ट क्लास के लिए भेजते थे. तो उस टाइम मैंने अभी आर्ट थेरेपी का कोर्स नहीं करा था. दिस इज आई एम टेलिंग यू अराउंड 14-15 years बैक. तो बट ऑटोमेटिकली मेरे साथ एक फ्रेंडशिप हो जाती थी पेरेंट्स की, और बच्चे क्लास नहीं समझ के अपने मन की बात मेरे साथ करना शुरू कर दिया था. एंड उसी से जब वो आर्ट करते थे तो मुझे कुछ नजर आता था, और मैं पेरेंट्स से बात करती थी. एंड लकीली, फॉर्चुनेटली, इंडिया में एक कोर्स हो रहा था उस टाइम, और मैंने ये टर्म कभी सुना भी नहीं था, और मैंने इमीडिएटली आई फ्लू टू द सिटी and I did this, and I went to London also and I did the course, because I felt कि आर्ट में वो पावर है जो एक बच्चा समझे कि एक बच्चा किसी को समझाने की कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बात सिर्फ एक माँ समझ सकती है. बिल्कुल वैसे आर्ट का भी वही रोल है. आर्ट हमारी लाइफ में इननेट है. इट इज देयर इन अस सिंस वी केम ऑन दिस अर्थ. क्योंकि जब शब्द नहीं थे, जैसे आई थिंक वन ऑफ योर पार्टिसिपेंट सेड वेरी ब्यूटीफुली, कि जैसे शब्द नहीं थे, तो इवन अर्ली मैन यूज्ड टू ड्रॉ एंड कीप इट इन देयर मेमोरी कि उन्होंने कौन से पशु पक्षी देखे शिकार के लिए. तो वो जो ड्राइंग एस्पेक्ट है वो हमारे साथ बिल्कुल एक माँ और बच्चे का एक रिलेशन है. तो जब मैंने देखा कि आर्ट की करते ही लोगों को एक फेमिलियरिटी और एक कंफर्ट मिलता है, तो मैंने देखा कि रूरल एरिया में बहुत सिचुएशंस हैं जिससे वो अपने मन की बात नहीं कर पाते. तब जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो बिल्कुल एक समझ लीजिए, आई फेल लाइक एम्ब्रेसिंग नॉट जस्ट 1,000 बट लैक्स ऑफ पीपल, क्योंकि दे गॉट दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, दे टॉक अबाउट देयर विशेस, दे स्पोक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एट होम. एंड आई डिड द आर्ट थेरेपी वेयरइन कि अगर कोई सिंगर बनना चाहता है तो पापा कहते हैं कि सिंगर क्या बनोगे, तो वो पापा ने अलाउ कर दिया सिंगिंग लर्न करने के लिए. कोई कहानी लिखना चाहता है तो ये टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तुम पढ़ाई करो. उसने अपनी कहानी लिखकर एक कॉमिक लिख दी, कॉमिक बना के रख दी. और ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे वो अपने मन की बात मन में रखते थे और बाहर नहीं बोल पाते थे, क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है, क्योंकि वो हमेशा इनसिक्योरिटी के साथ जीते हैं. बट आर्ट से उनको एक तो सिक्योरिटी मिली, एक आवाज मिली, और उनको अपने बारे में पता चला. सो टुवर्ड्स द एंड, like Maslow's law, I always say that art therapy leads you to the level of self-actualization and self-realization, especially the people who are struggling with physiological needs, self-esteem needs, belonging needs, and security needs. Yeah. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड लिटिल बिट नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी दैट आई हैव, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है बहुत ही रिलेटिव टर्म है. मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरा जो परिवेश है, जो मेरी माँ है, जो मेरे पिता है, जो मेरे बड़े भाई हैं, they don't allow me to do what I want to do. So here comes the role of a art therapist. You have to teach me, you have to incite that self actualization in me, as well as in the mindset of my family members, my mother, my father, my sister, my brothers, those who matter in the making of my career and decision making of my career and job orientation. तो आपने विद्यार्थी की तो बात कर दी. What did you do with the parents? So parents very strict. पेरेंट्स के साथ मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट हूँ. पेरेंट्स को मैं एम्ब्रेस नहीं करती, मैं बच्चों को एम्ब्रेस करती हूँ. सो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट बिलोंगिंगनेस. वो
आपने बच्चे पैदा कर दिए और आप कहो कि ये बच्चा मेरी जागीर है या मेरा बिलोंग्स टू मी, दैट इज वेयर आई वांटेड टू ब्रिंग अ शिफ्ट। क्योंकि यहाँ पे एक ओवर रूलिंग और कंट्रोलिंग होने की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे जिंदगी में आते हैं, पेरेंट्स एक जरिया है, बट वो बच्चे बच्चे नहीं रहते, बल्कि एक इंसान को जिंदगी में आने का पेरेंट एक जरिया है। और पेरेंट्स का रोल है बच्चे को दुनिया के लिए तैयार करना, ना कि उसको दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए कर्व करना। तो आर्ट थेरेपी और पेरेंटिंग जो मैंने नाम ये दोनों रखे हैं वो इसलिए रखे हैं क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो आर्ट थेरेपी से आपको कुछ ऐसे थेरेप्यूटिक टूल्स में करती हूँ जिसमें 10 सेशन से 15 सेशंस लग जाते हैं, जिसमें आप अपने बारे में बहुत अच्छी तरह जान पाते हैं एज पेरेंट्स। और आपको अपने बारे में पता चल जाता है कि आपके अंदर की इंसान, आप इंसान कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, आपके विशेस क्या है, आपका क्या फोकस है लाइफ में। क्योंकि जो आप करेंगे आपका बच्चा वो ही कॉपी करेगा। दूसरी चीज जो मैं एक और चीज पेरेंट्स को कहना चाहूंगी इसी बात के साथ, कि walk the way you want the children to walk, talk the way you want your children to talk, eat the way you want your children to eat, and live the way you want your children to live, even if you have to change. So, अगर आपने पेरेंटिंग ठीक करनी है और अपने बच्चे को कुछ बनते हुए देखना है, तो सबसे पहले अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानिए। अगर आपको लगता है जब आप जान गए, पहचान गए आर्ट थेरेपी के द्वारा मैं कौन हूं, तब आप अपने चेहरे को देखिए, क्या मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे बनना? क्योंकि अगर मैं ऐसा हूं तो मेरा बच्चा भी ऐसा होगा। तो ये आर्ट थेरेपी और पेरेंटिंग का रिश्ता है। आर्ट थेरेपी से पेरेंट्स के बारे को अपने बारे में पता चलता है, पेरेंट्स फिर अपने पेरेंटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं मुझसे, और फिर वो अपने पेरेंट्स बच्चों को रेज करते हैं। सेम चीज जिसको मैं फैमिली थेरेपी इंटरवेंशन कहती हूँ, मेरे को बच्चों को भी सेशंस में लाना पड़ता है। मैं उनके बारे में जानती हूँ क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो 20% रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग 80% अपने स्कूल, अपने पीयर ग्रुप में होता है। उसमें से क्या बीच में आ रहा है जो पेरेंटिंग में इंटरप्ट कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा एक फैमिली थेरेपी इंटरवेंशन बन जाता है, जिसमें बच्चों को क्या सीखने को बाहर मिल रहा है और पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अभी एक वर्कशॉप में मुझसे पूछा गया कि सिबलिंग राइवलरी को कैसे हैंडल करें। मैं तो यह कहना चाहूंगी पेरेंट्स को, जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो सबसे पहले ये जानिए कि आपका रोल ही किसी राइवलरी को एंड करना है, ना कि उसको देखकर फ्रस्ट्रेटेड होना है। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो इसका मतलब वो तैयार होके नहीं आए हैं, आपने उनको तैयार करना है। एंड कॉल योर सेल्फ लकी एंड गेट योर सेल्फ रेडी when the children pose problems, because when they pose problems your role begins. And if you are pass in this role, that's when you are able to bring the children in the take the children in the right direction. Yeah. वेरी गुड आंसर। एडिशनल क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा है। वो लिखते हैं डॉक्टर अंजनी कुमार झा कि आर्ट थेरेपी गिव्स पीस ऑफ माइंड, बट हाउ कैन इट लीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन व्हिच डिपेंड्स ऑन सक्सेस इन गिवन सर्कमस्टांसेस? प्लीज एक्सप्लेन मैम। Did you understand the question, or should I repeat it Yes. again? Yes, I have understood the question. Okay, okay. I have understood the questions. So, Please carry. yes, art therapy gives peace of mind. Here, I would like to correct one thing. Art gives peace of mind. Therapy leads to self actualization, because थेरेपी का मतलब ही यही है। थेरेपी को अगर हम सिर्फ एक कैथार्टिक एक्टिविटी समझें कि हाँ मेरे को बड़ा थेरेप्यूटिक लग रहा है, पर थेरेपी को अगर हम गहराई से देखें तो थेरेपी है ही सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस की अपनी पहचान नहीं मिलेगी, वो थेरेपी नहीं कहलाएगी। बिकॉज टुवर्ड्स द एंड, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस? The true happiness is I'm the navigator of my life, right? When you become the navigator of your life, do you need anybody else? You don't. So that gives you peace of mind.
Now coming to self-actualization, leading to self-actualization, which depends on success. Self-actualization cannot come overnight through art therapy. Art therapy, first of all, leads you to self-awareness, and self-awareness helps you to always be the navigator or use the torch of understanding in all your experiences. आपके जो तजुर्बे होते हैं जिंदगी में, उसके लिए आपको टॉर्च मिल जाता है आर्ट थेरेपी से। जब तजुर्बे होते हैं तो उन तजुर्बों को आप प्रोज एंड कॉन्स में वे कर सकते हैं। आप उन तजुर्बों से सीख सकते हैं कि मुझे क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। और एक आर्ट थेरेपिस्ट के साथ आपका वो रिश्ता बन जाता है कि आपने अगर एक सेशन 10-12 सेशन लिए, 15 लिए और आपके लिए आप नेविगेटर बन गए, तो शायद कहीं पे अंधेरा आ जाए तो आप आर्ट थेरेपिस्ट के पास वापस आ सकते हैं। सो दैट इज वेयर इट लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट इज जस्ट लाइक कि आपको आपकी डेस्टिनेशन नजर आ रही है, लेकिन रास्ते में ऑब्स्टिकल्स बहुत है। उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए आपको आना चाहिए कि मेरे पास टॉर्च कब होनी चाहिए। मेरे पास, मैं उस टाइम एक मूवी देख रही थी, तो ये डॉक्टर है जो बाहर एक स्टॉर्म आ रहा होता है कहीं पे, तो वहां पे वो किसी को एक कैंप लगा होता है, तो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं उस कैंप में स्टॉर्म हिट पॉपुलेशन को ट्रीट करने के लिए। तो उनकी वाइफ जो होती है, बाय चांस उनको एक टॉर्च दे देती है, मफलर दे देती है, पेंडेंट दे देती है, पेन दे देती है। और जब वो वहां पहुंचते हैं कैंप में, तो एक बच्चा रो रहा होता है, तो उसकी सिस्टर कहती है कि इस कान में उसके कान में कोई प्रॉब्लम लग रही है, रोए जा रहा है। तो उसके पास कुछ होता नहीं है, तो वो टॉर्च निकालता है। टॉर्च से नजर आता है कि कोई प्रॉब्लम है, वो निकाल के ठीक कर देते हैं। फिर एक पेशेंट के लिए कोई आईवी टाइप कोई कुछ लटकाना होता है, तो वो मफलर यूज कर देते हैं। बिल्कुल वैसे आर्ट थेरेपी आपको प्रॉप्स की तरह आइडियाज दे देते हैं कि आपके लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। इट्स एज डीप एज दैट। Brilliantly said. You have introduced science here in it. You said कि art of painting is an art of creativity, and therapy is the art of actualization of your this thing. So these two things are very much clear. Now again, very beautiful question, beautifully kept by Dr. Rajiv Verma. He says, is there any connection between art therapy and art of living? Whether the art therapy paves the way for a balanced living? Did you get the question? Yes, I got the question. It's a beautiful question, and मुझे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने में एक खुशी भी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे एकदम से नजर आ जाता है कि पीपल आर गेटिंग इनटू द राइट डायरेक्शन, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19, राइट? Mhm. Yes, art therapy or art of living का connection, again I would take it back to the last topic that I used, कि जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप आ जाता है, राइट? एंड सेकेंडली इज, आई थिंक आई लॉस्ट दैट समथिंग he had written, Dr. Rajiv Verma का, can Dr. I have Rajiv Verma, yes, is there any connection between art therapy and art of living? Whether the art therapy paves the way for a balanced living. बैलेंस, राइट? सो इसमें बैलेंस लिविंग देखिए, आई वुड से देयर इज अ वेरी थिन लाइन जो हर इंसान जो आर्ट थेरेपी नहीं भी करता, who uses a very thin line between wisdom and compassion, wisdom and foolishness, मेच्योरिटी कह लीजिए, तजुर्बा, सोच समझकर पढ़े लिखे लोग भी, उनके बीच में भी एक विजडम और फूलिशनेस में बहुत पतली सी लकीर होती है, वो ही आपकी लाइफ को इम्बैलेंस कर देती है। सो आर्ट थेरेपी, आई वुड से, ingrains, it's like a stamp that helps you to balance your life. Yeah. एक क्वेश्चन और है, वो है डॉक्टर दिलीप कुमार का। वो साइको एनालिटिक की बात करते हैं कि अगर किसी को
psychosis का issue हो, you know that you understand psychosis very well. So he has gone into the pure psychological, clinical psychology kind of thing, and he asked to know कि is it possible to cure the psychosis issues relating with psychosis of the patients through art therapy? That is his question. Yes, I think cure is a very powerful word, uh, but to a great extent, it heals, right? So for psychosis, because it's a very chronic situation that a patient deals with. So psychosis may, there are different, see, art is actually the projection of the state of mind, right? Art image. So जो प्रोजेक्ट आप करते हैं उस प्रोजेक्शन में ही पता चल जाता है कि there is psychosis in a person because कहीं ना कहीं there is perspective issue that is showing in the art or the way the artwork has been made. You can make out that the person is dealing with the person is not in touch with the reality. So जैसे ही वो पता चल जाता है इज नॉट इन टच विद रियलिटी तो उसके दो स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप होता है ग्रेजुअल प्रोसेस थ्रू आर्ट एज अ ब्यूटी. Okay, art is a beauty wherein the patient begins to feel good because there is something that has led the patient to get into psychosis, something very ugly or something very traumatic, right? But the moment art as a beauty begins to come in the first patient's life, then the patient automatically begins to have happiness chemicals, right? And that tends to build the bond between the patient and the person dealing with psychosis and the therapist. And that bond helps the patient automatically to feel good. The feel good factor comes there when the art begins to look beautiful and the art therapist tends to can also go to the level of becoming a teacher in art ki chalo hum ye karte hain hum ye banate hain. So wo jo bana, that is the second aspect. That is when, say for example, I become an art teacher and I say जो आपने घर बनाया चलो हम इसको बड़ा घर बनाते हैं, हम इसको पेड़ को इतना खूबसूरत बना देते हैं, हम इसको कल्प वृक्ष बना देते हैं, गिफ्ट गिविंग ट्री, रिवॉर्डिंग ट्री. सो वो कल्प वृक्ष बनाने से एक इसी प्रोसेस में, so there is a very famous art therapist who's no more with us, is called Edith Kramer, from UK, from England. So Edith Kramer believed in one thing. She was an artist and she believed in one. She used to work with children. She believed that the object that is made, the artwork that is made on day one, and the same person making the artwork on day four tells the difference in the person from day one to day four. So आर्टवर्क की जो प्रोजेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक पेशेंट के अंदर जो हीलिंग हो रही है वो आर्ट में पता चल जाती है through the process of art. So I have a case over here. So there was this patient who was dealing with psychosis, diagnosed with schizophrenia, and he used to always make कमल का फूल. वो और कुछ बनाते ही नहीं थे सिवाय कमल का फूल. तो मैंने वो कमल के फूल का ही एक ऑब्जेक्ट लेकर उनकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दी. तो मैं उनको बोलती थी आज फिर से कमल का फूल बनाओ, फिर से बनाओ, अच्छा आज छोटा बनाओ, आज बड़ा बनाओ, लेकिन वो हमेशा एक साइज का बनाते थे. मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनको कमल का फूल बनाने के लिए नहीं रोका, लेकिन उन्होंने एक टाइम आया, उन्होंने सारे सारे साइजेस के फूल बना के मुझे एक चार्ट पेपर बना के दिया. उन्होंने बोला आज मुझे समझ आ गया छोटा कौन था, बड़ा कौन सा था, मीडियम साइज कौन सा था, इससे बड़ा कौन सा है. So you see, the process in art therapy helps you to understand, to get in touch with the reality. I will not say that the medical intervention is the intervention is not there. Definitely, the patient is having medicine, and that medicine together with as a mood elevator and the intervention of art therapy together helps especially the patients who are not able to be in a psychological intervention but can be in a creative therapy intervention.
it works best for people with psychosis. Thank you. I think Dr. Kumar must have got answer of his question and curiosity, whatever he had. We had a little answer, like a sense of satisfaction and gratitude from Dr. Rajiv Verma. He says, thanks for your reply. He's happy with your reply. And Anjani Kumar Jha has some shared information you have already discussed. He has said. But before that, I would request you to answer the queries of Charu Jain. Jain is a young professional, a dynamic girl. She says, how can we achieve work-life balance using art therapy? Beautiful, a beautiful question, very important. मैं actually एक time था जब मैं corporate में help करना चाह रही थी, but with the time issues, I could not really go in there. Then I started training many my art therapy interns into art therapy so that the young folks could go to the corporate. Uh, Art, like I said, is has art therapy has two aspects. One is art as a therapy, and one is art in therapy. So work-life balance means there is stress for sure. So art as a therapy is very good to release stress. So you can say, for example, आपको जो image अच्छा लगता है, if you're fond of landscape, you could do art every day in your life, right? Every day. So when you do art every day, so you could have a mandala coloring book, which is a great stress buster. You could put on some nice meditative music, which is a great stress buster. So when you have art in your daily life, it helps you first of all to calm yourself down. Second thing is, I would suggest that people who are going through work-life balance stress, they must consult an art therapist. I've had clients who were my clients and they ended up becoming my friends only to come and do art with me over a cup of coffee. So it is very important. So that is another aspect of our therapy wherein a relationship building is the bonding is so beautiful that a person finds a friend in an art therapist because usme art, which is a fun element, which helps you anyway as a catharsis. Second thing is, because our therapist is a trained art therapist, she knows through the images what could be going on in the subconscious mind of the person and could help her to understand that you could heal yourself in this direction or you could take this direction more as a counseling. So obviously it leads to counseling. Yeah. I don't want to interfere into your mandala. This art is called mandala. The ceiling and all those things where the arts are designed, they are called mandala. So, but someday we'll discuss about mandala and its formation and how our art therapy works. I have done Yes. little work in this, but again, Dr. Dilip Kumar is very, very pleased with your answer. He says nicely explained. Again, I am going back to Dr. Anjani Kumar Jha. Uh, Almost 50% of his question is being answered by you. He says, I have referred some depressed, dull, and drab patients to use red clothes, red underbark, red clothes. The result was encouraging in most of the cases. Is it due to the color? He is talking about the color systematization, color acquisition, and color has some symbolic uh, interpretation with a specific disease or disorder, like this kind of thing. He wants to Yes, yes, color is important. The choice of color that a person takes, that is also one of the focal point, whether it's any color, black, blue, brown, red, pink, green, white, even white, which is seen as a blank, has its meaning. Yes. So the choice that a person takes to even wear the clothes or the choice a person uses to even color the images talks about the state of mind and talks about what that person's personality is. So colors actually talk about the state of mind as well as the personality of the person. Yeah. the But sensible color the sense therapy जो psychology की है वो different होती है. वो and different. great, and the sensible viewer is again supplementing it
question with sense of answer. He says color therapy is effective art therapy. Is not it, ma'am? I think what would be your answer for this? It's like I yes and no. I have actually not touched. I will be very, very honest here. I will fair and Very good. honest that I have not touched Ah. the color therapy as a paradigm at all. So I will not be able to answer there. I've only touched art therapy and color inside the art therapy, but color therapy is not my field. So I really will not be able to answer there. Yeah. So you are getting almost 99% marks from your audiences. Thank you. Charu Jain says, Charu Jain says, thank you for the Thank you. explanation and suggestions. She's very happy with you. We have Hemant Kumar. He said, in this COVID time, thanks for touching this very important topic. Now, I have one curiosity. You are a very, very religious person. You are a devotee. And you are also a follower of what you call Bharat Soka Gakkai. And you are the ardent follower of, Dai Saku Ikeda. So tell me how the chanting of the what you call the Buddhist chanting mantras uh, and the art therapy, how these two things will these two things go together, and does it help Uh, you? Yeah. Authentically and ethically, I may not be able to talk about Bharat Sokagakai because being a member and a leader in my own way, we have some ethics. I'm really sorry about that, but because for no other reason, because of its, I would say, there are always the principles and policies are made for the purity and protection of the humanity, like lying in it. Second thing is, I would definitely be very, very proud to say that when I joined Bharat Sokagakai, in fact, when I started chanting, art therapy came in my life. That's the link. That's the link. So 11 years back, when I began to chant, that is when I got connected to my true power. We all have our inner infinite power. So I got connected to my true power, and that was art therapy, and that's all. That is all because of my practice. Yes, I am spiritual. There is a difference in religious and spiritual. So for me, religion is one religion, but religare, I think religion has its meaning, which is called religare, and religare means more like a discipline. And yes, discipline is very important in any spiritual practice, but spirituality is about, somebody had said, which I'm sure you would be knowing, is the science of spirit. So we're all, so spirituality means connection with human beings, connection with humanity. And that's exactly what I'm doing through art therapy. And that's what my spiritual practice identified that need in me before I knew about it myself. And when I identified it, I knew this is for me. Yeah. Spirituality, is a kind of connecting your mind with nature, with Yes. supernature, with God, and with anything that you think that can allow you to concentrate yourself in one direction, monocentric direction. And when you are concentrating, you get additional power to sort out the issue. That is the power. So the bija mantra, you take few word and then you recite them. So that after sometimes, after 5 6 minutes, you reach to a level of the cozy easy way of getting close to your supreme reality. It can be God, it can be anything. So very well said. And again, Anjani Kumar Jha says choice of color depends on the planetary position. Yes, sir, it does depend, because planets has color, or accordingly you do. You want to answer? You please answer. No, I think Dr. Anjali, because this is very interesting. I really did not connect it to the planetary position. For me, I think I've always looked at the world only from one prism,
prism, and from one direction and one prism, and that is only and only humanity and an existence of humanity. So definitely planetary plays a very important role when it comes to the existence of the universe and humanity. And I'm learning that. I really had no idea about it. That's very interesting. Yeah. In my discipline, I've been taught silence is acceptance. So we have a doctor with us watching this program, Dr. Mamta Thakur. She's a social worker, also doing so many things, and political ambition also she has. She is silent, but she is witnessing your program. She has been listening to you. So if she has something, she will tell you. So now again, uh, how that. That the Krishna consciousness uh, group uh, approached you, and what you did for them, and what was your achievement? There is this I mean, contact we Scott. I had. mean, Scott. Mhm. ISKCON, yeah. So there is this very dear friend of mine who's in Krishna consciousness, and in fact, we became friends because it was one of the project from Wimhans, and I being very spiritual, and I do take interest in reading scriptures a lot, and I believe a lot in reading scriptures and understanding the spiritual power around across the world. So we are very good friends, and she happened to just become a principal of a school which has been taken over by ISKCON. And for the orientation of the school, so she's seen me working with children in Gurukul. She's seen me working with the teachers with art therapy as a training for the teachers to understand children, or also to heal themselves before they enter the classroom. So she's seen me working, and so she wanted to understand that how, as now she's become a principal of a school, how can she bring the new platform of art therapy in for parent and child. So there is a approach called dyadic art therapy approach, which is done between two people. So it is majorly beautifully done between a parent and mother and a child, a parent and a child, where the art therapist plays a role in bringing the mother and a child together over art. And it's like a training, it's like healing, it's like not a play therapy, but it is about images. It is about images. So so they invited me to actually address the parents and teachers, and a very wide international platform, which is very well connected with the esteemed ISKCON organization. So it was a beautiful platform that I had, wherein parents really came up with a lot of challenges with the children, and they had never thought that there was a very fun play way of interacting with their own child. So I was able to help them to understand that if there is any challenge that you're having with your child, or you're seeing that the child is isolated and the child is not talking, looking depressed, then sit over art as an activity, and how you'll be able to understand that what the child is trying to express. Number one. Number two is, I strongly believe that schools and organizations, even corporates, must have a recreation center. In that should be the element of art therapy, whether it's universities, whether it's schools, whether it's any institute, must have a corner, like a bubble room, where there is art therapy and an art therapist sitting over there, or even an art teacher who can be educated in art therapy, wherein every child, if is given platform to talk over art, really helps. So that was the purpose of their interaction with me and my interaction with them. I'm getting some feedbacks, like from Anjani Kumar Jha and others, and that gives me a sense of understanding art therapy in the context and pretext of India. When Berger came to India,
It came as a non-vegetarian burger. They didn't even imagine to have base burger. But when it came to India, and especially went to Gujarat and other states, which is a hardcore vegetarian state, they experimented something. So instead of putting salami, meat salami, and all those things, they put vegetables, potato and paneer and cheese and other things. And veg vegetable became a super heat kind of thing in India. Now the kind of suggestions that we are getting, including astrology, including meditation, including yoga also, and including the chanting hymns from the Vedas and from the Upanishads, from the Buddhist uh, mantras, and making them together, creating a total platter where this system would work more or probably most efficiently in India. Do you agree with this Yes, synchronization of the thing? yes, yes, it is. It is. So It is. I would, I think I so. would say, I would say it is very much like my women's hospital, wherein, how I embraced all and everyone embraced me. So I think somewhere or the other, every area has something to deliver, something to convey. So it is very important to, and I feel, even when I became a Buddhism practitioner, even I call myself a human being. I don't call myself a Buddhist or a Hindu or whatever. But it is about practice, and it is about scriptures, and it is about what appeals. So one of my friends, she happened to ask me that you've always been so spiritual. Bachpan says, what has caught you in Buddhism? I say, well, I think I've been always very comfortable with English language. So that's what's caught me. Similarly, I think everyone has got a choice. So some people may have a choice to have a deeper understanding of planetary movements, so hence astrology. Some people have a choice or an understanding or an interest in art, so they will understand through art therapy. Some people have interest in something, etc., etc., etc. But when it comes to art therapy, if I see, it is actually what, and I've dealt with all people, all uh, different interested people in different things, variety of population. uh, Art therapy is the opening of the mind. It's like a dart. It opens your mind, and when it opens your mind, go ahead and do what you want to do. You want to go to the astrologer, go to the astrologer. Because that opening of the mind is helping you to go and understand whatever you're interested in. Great, That's my experience. Yeah. great, And great. astrology. Oh, I love your experience because I know you are a workaholic, and I know you have been experimenting day and night. You are Yeah. thinking, always about this, about the development of this discipline. And you also accept that the holistic approach in art therapy, India centric approach, you take the things from other corners of the world and make it Indianized. And if that is properly made, but we are able to make it a platter with everything available, it will be accepted by the people of India. And for such a big population, we need various measures of Yeah. health system, and this will be a wonderful health system. Last thing segment of our discussion, I want to talk to you quickly and briefly. This coronavirus COVID-19, it is a big slap on the entire scientific innovation and so-called developed countries and scientific community, doctors and everybody. Now, the report that we are receiving, that it has enormously increased the domestic violence. Women are beaten, daughters are rough handled, wife are beaten, sexually abused. Uh, you know, there's so many wrong things are coming. Family, domestic violence. If some cases come to you, or if I tell you as an art therapist,
What is the solution you have in your mind which can go to our viewers as a message? Look, if this is the situation, here lies the answer. Adopt it and live happy with your family members, in the family, society, and the nation. Here, I would like to say that yes, the COVID-19 has not only um, uh, you know damaged some family issues have begun to crop up. Not only domestic violence, but various other economical issues have also cropped up. Let's look at it from a bigger picture, not just think from the domestic violence, which is very, very sad, yes. If you look at the bigger picture, like, for example, let's look at the root cause of what has happened, right? When we're living our life with various directions. You get up in the morning, you go out for your work, you come back, women go out to buy veggies, they go for work, come back. You have socializing to do, children go to school. What is all this? This is actually keeping your mind occupied. You are being productive. Your creativity is tapped. You are doing something substantial in your life, right? Now, suddenly everybody's clogged and locked up in the room with no activity whatsoever. First of all, why did this happen? Let's go back to that. This happened because we always have to realize that we all are part and parcel of one phenomenon. None of us can, none of us, because I know that we all are very much aware and matured and understanding and philosophical here, that we all are a part and parcel of one phenomena. When we are all a part and parcel of phenomena, the consequences that we are facing of the actions that has been taken by the population on this earth, that shows that what quality of life everybody is leading. If the quality of life is negative, we can see the consequences in the form of COVID-19. We can see the consequences in the form of natural disasters or any kind of other diseases, right? So when we understand this, so first of all, we need to correct the root cause of the situation that leads to COVID-19 kind of situation. Now, what is that situation that is leading to COVID-19 situation? अगर आज मैं सिर्फ एक इंसान को ट्रीट करने के लिए बोलूंगी, काउंसलिंग करने के लिए बोलूंगी, yes, I will be able to help every family one by one. But if we collectively on a broadcast and understand, that it is the anger, it is the lack of time that we are giving to the family. It is the rat race, which are the kind of quality life that we are leading. It surely will lead to COVID, will lead to domestic violence, will lead to suicidal situations. So we need to find the true solution, the core solution to it, not just by only focusing on domestic violence. Okay, but what we really need to focus in on is humanistic approach in every aspect. Say for example, it is a financial sector. In financial sector there can be so much of corruption. Business sector there is so much of corruption. Any educational sector there can be so much of corruption. The corruption has to stop. Now, when the corruption does not stop, the people who are staying in the house, that is, if the husband is working somewhere and is a victim of the corruption, surely that person is going to throw his frustration on the weaker person. Or if the woman is not in the right state of mind because the family atmosphere is not good, then surely she's going to throw the frustration. So it is basically all about how we can reform and transform our environment on the whole, one by one. If I'm in the art therapy, if I'm in the health sector, how can I make it my responsibility to make sure that I take mental health education to people for mental health well-being? If somebody else in the education sector, how they can make sure that each and every student is getting that time, that ear to listen to
for the family, for them to be for their well-being as an individual, not just as some parent's child, as an individual, right? And if I am working in some other sector, how I can take it as my responsibility that I don't encourage corruption. I give importance to humanity. I use humanistic approach. So what I would say, the answer to that is, we must build the most important paradigm, and that is humanistic education, which must become mandatory for everyone in every sector, and our therapy as a studio in every sector, so that everyone gets a platform to express themselves, to heal. Like, say, for example, you're talking about domestic violence. If the person is aware of their personality, who says that no family has a problem? But it is what we are aware of ourselves. Say today, if I have a problem, and but I'm aware of the causes that I'm making in my life, and I'm aware of the effects of the causes that I'm making in my life, I am going to be very careful in the way I speak, and I do not become a threat to the other person, because I'm aware is the consequence violence hoga. That is where it leads to self-awareness. So I would say self-awareness is extremely important. Self-actualization is extremely important for every area to be safe. That's my answer. Again, Dr. Jha is talking, in Mithila, there is a tradition of murmuring or churning some kind of a specialized mantra in the ears of the young babies, and if the baby is suffering with something, so the passing of the air, whispering of the person who has been chanting, and the mantra is almost lullaby kind of mantra which has a Buddhist connection. But if I directly say Buddhist connection, people can start fighting with me. And I might also tell you that a psychologist, Sanju Mishra, is also watching your program. So Okay. it's more of a psychological hymns, which is poured into the ears of the baby, and baby gets some kinds of warmth and some kind of a sense of concentration. And when the concentration is there and touch of the person, second person, so healing touch is there, and yeah, it cures or partly cures, or it gives time bound satisfaction for some specific time. This tradition is India. He probably wants to tell you that when we are talking about this art therapy, art is a wider term, and if we can also include those things which are in practice in the remote tribal rural folk areas of India, they can be of good use in that thing. I just wanted to say that in this segment, do you want to say something? I just want to say that we need not ever judge anything when we are doing something good. If we are touching and murmuring mantra in a child, we are doing something good. So the good need not be evaluated, need not come to the level of being evaluated or judged. Just do it. Just do Mhm. it. There are various ways of doing good that never needs to be, we never need to mince there. Every act of goodness is worth it. Yeah. Yes, it is also said that every act of tradition you should follow if it does not harm you. If it does not harm you. If that does not Absolutely. harm you. So I Absolutely. think probably he also wants to convey this message only. I think this message has been Yes. conveyed to him. Yes. Uh, I want to know that if some of our viewers want to contact you, and I have your number and details, I can give them. I think you can guide them, counsel them, treat them, whatever way you want to do this. Uh, your system doesn't allow you to speak, because I wanted to tell, because I'm also associated with Soka Gakkai Daisa Keda, but I am associated as a scholar, not as a The devotee or not as scholars. a part of it. So I have a freedom to talk.
But I wanted you to speak, but anyway, I will not compel you to speak about it. But because that has a great value, it is directly linked with what you have been doing because it gives you a scope of concentration. It gives you time to think seriously about it, and you are successful in your domain, whatever you have been doing. I have seen you working in the tribal, remote tribal, urban, folk area. Every area you have been doing wonderful job. So, friend, this was Sonia Bhandari. It was nice that you came. Nice that you discussed with us. Nice that you have delivered very meaningful talk. And we keep inviting, great, fascinating people like you, resource persons like you, who matter for the society, who are contributing their services for the society, and society is getting benefit of it, who are experimenting new things for the society, who are experimenting the outside agency according to the text, context, and pretext of India, and that makes you unique. If you want to say something, final word of your this. I think I just need to say thank you. Thank you for giving me this platform to talk about something which is so valuable and so effective. And nothing could make me happier than to see people evolving to become happier. Okay. Finally, I have one good news for you. Tomorrow, we have invited a Padma Shri in Madhubani or Mithila painting, Godavari, the Padma Shri Godavari Datta. She has experimented so many things, and in return, she has received the fourth highest civilian award from the President of India, Padma Shri. She will be coming. And as you are working with the brush paint and colors, as you are working with the emotions and expressions in arts, so I think her presence will give you so many new identities, so many new scope of of intervention or interpretation or introducing in your system. So I would request you to come tomorrow at 6 o'clock evening. Uh, Please come and stay with us. Thank you, friends. आप लोगों को Thank बहुत you. बहुत Thank you so धन्यवाद. much. Thank you so आप much. लोग Thank थैंक you. यू Thank you, Dr. Mishra. Thank you. थैंक यू. तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. ये थी डॉक्टर सोनिया भंडारी, आर्ट थेरेपिस्ट. बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे साइको एनालिस्ट है, बहुत अच्छे आर्ट थेरेपिस्ट है, और मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं. और आप लोगों को इनकी किसी भी तरह की सेवा की जरूरत हो तो फोक ब्रेन के ऑफिस से या वेबसाइट से आपको इनका नंबर मिल जाएगा. आपको अनेक धन्यवाद. मैंने बता ही दिया है, कल हम लोग मिलते हैं पद्मश्री गोदावरी दत्ता के साथ 6 बजे कल्चर मैटर्स विद कैलाश में. तभी तक के लिए आप सभी को धन्यवाद.